हेले जो एडवेंचर अच्छी एथिरे व्हाट इज एडवेंचर व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रीड एंड डिस्कस। अच्छा एथिरे से देइची आर 4 हेडिंग्स, चारिटा हेडिंग देइची एंड 4 मैगजीन एक्सट्रैक्ट्स। ये चारिटा मैगजीन एक्सट्रैक्ट्स देइची, हमें ताको मैच करी। ओके, so the inaugural round of the 250cc Rodil Trophy Motocross World Championship was held before 17,000 spectators at the Jawaharlal Nehru Stadium in Pune. India's lone entry जणे खाली जॉइन करथिला सेतिरे हला 17-year-old जगतवीर सिंह ऑफ पुणे, से भी पुणे लोकटा। ओके 17-year-old मात्र हला completed the race and picked up the first Rodil championship points for the country. Okay, से रेस completed the race, से ताको रेस टा पूरा करछि। हां ओके पॉइंट्स पाइछि पूरा, picked up the first Rodil championship points for the country. Stadium motocross racing has everything it takes to create a glamorous national event. Stadium motocross racing has everything it takes to create a glamorous national event. Okay, कहीं ना एथिरे स्पीड अच्छी, स्किल अच्छी, स्टंटमैनशिप अच्छी एंड ए लॉट ऑफ नेल बाइटिंग ड्रामा। नेल बाइटिंग ड्रामा माने नख पूरा ये करिवो, माने तुम देखिला बेला नेल बाइटिंग। एनु कौन लिखिला स्टेडियम मोटरक्रॉस रेसिंग, स्टेडियम रे जोटा होची। एनु एटा कोथरे जाउची, एटा जाउची स्पिरिट ऑफ डेयर डेविलरी बोले हैला। नेक्स्ट होची फॉर 20 इयर्स वाल्मीकि थापर रोम द फॉरेस्ट, रोम माने कोन बुलिबा, फॉरेस्ट ऑफ रांथाम्भोर इन राजस्थान, hoping to catch a glimpse of a tiger, है ना। 20 years से बोली चलती टाइगर पाइबे बोले देखिए बोले। He did see its pog marks, okay, pog marks I think ता पाद चिन्ह होगी कौन है तो, and fresh droppings, okay, but it was only the night before he was leaving that he finally spotted the beast striding majestically down a forest track. कौन कहला हला, but it was only the night before he was leaving, माने से जस्ट ता पूर्व नाइट हला that he finally spotted the beast। से दिन से जीवार पूर्व दिन ताकू से देखिले। से कौन देखिले, spotted the beast striding majestically down a forest track, से पूरा जाउची बढ़िया आराम से जाउची पूरा स्ट्राइडिंग, आगु आगु जाउची, गोट जाउची गोटे फॉरेस्ट ट्रैक, गोटे ट्रैक अच्छी बाट अच्छी से बाटे जाउची। फॉर थापर that sight was to begin what he describes
an endless pursuit to observe and discover more about one of the world's most elusive and evasive nocturnal predators. So for Thapar, that sight, se jo sight ta drishya was to begin. Huh? So what he describes, so huh? So that sight he saw. Huh? So what was that? It is an endless pursuit. Pursuit माने तांकर जो चलथिला हला गोटे जो पछरे लागिथिले हला pursuit to observe and discover more about one of the से जानिया चाहूले ना डिस्कवर ऑब्जर्व करिया चाहूले हला सेटिमेंट से लागिथिले एंडलेस पर्सुइट माने लागिथिले to observe देखिया को and discover करिया को हला more about one of the world's most elusive and evasive nocturnal predators. तो नक्चुरल एवढा ही रास्ती रे ही जानती बुझिपारछ ना नहीं प्रिडेटर्स हाँ एडा होची गोटे प्रकार शिकारी पशु हाँ सो इवेसिव एंड इल्यूसिव एवढा इल्यूसिव तुमको तुम जानी परिबनी हाँ से पळेबे हला तेणु for Thapar that sight was to begin. Okay. तामाने he will begin more. He will see more. He will find more natural things. Natural predators. So it कौन होगा? The trail to discovery, I think. Okay. Cave exploration. Cave. Gumpha. Cave exploration. Or pot holding. Cave exploration is both a science and an adventure. Cave. The Frankfurt geologist Gerhard Schmidt has been descending into the depths of the earth with like-minded colleagues for more than 10 years. Okay, तामाने से बहुत थोड़ा गलेनी भीतर को has been descending से गलेनी भीतर को ओले लेनी बहुत थोड़ा and has reached depths up to 975 meters in Turkey, Sardinia, Africa and South America. Smith and his team crawled on their bellies through gaps in the rocks to unknown regions. माने गुरु ये भी पेटे पेटे भी जाइछन्ति कोडु गैप्स इन दी रॉक्स ता भीतर से जाइछन्ति बहुत अननोन रीजन्स को जाइछन्ति बहुत तळकु से जाइछन्ति द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ केव इज जस्ट as enticing as climbing the highest of the mountain peaks. Enticing माने लोभनीय है ना इंटरेस्टिंग तेणु सेटा जेमती एटा सेमती के गुंफा भीतर पशि पशि जीवा एक्सप्लोरेशन है ना डिस्कवर करवा
Huh? Enthusiast, so that so this माने एटा गोटे मजादार जिनस बोली है enthusiast Gerard Smith when talking of his daring excursions. Okay, so that cave exploration is as enticing as climbing highest of mountain peaks. Huh? So that enthusiast, huh? Huh? So that enthusiasm means that he says, okay, he says when talking of his daring excursions. So when he talks about his excursions, he tells like that. Okay. So it would be, I think, gateway to the underworld. Huh? Cast up, the order sent the cadets scrambling up the rat lines like monkeys to unfold the cells. Varuna was on its way to Australia, 8,000 nautical miles away. Nautical miles. Okay, it is a unit. Huh? Miles, ये मापंदी, huh? To take part in the tall ships event along with the 19 other countries. So cast off, जाओ, ହେଲା, यात्रा शुरू करो. Huh? The order sent the cadets scrambling up the rat lines like monkeys. Okay, so to unfold the cells. Varuna was on his way to Australia, 8,000 nautical miles away, to take part in the tall ships events along with the 19 other countries. It was a part of the 200th anniversary celebrations marking the landing of the first European settlers in Australia. ସେଥିପାଇଁ ऑस्ट्रेलिया जो यूरोपियन माने आसिकरी सेटल करथिले ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 200th anniversary करा होची सेलिब्रेट करा होची ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ कंपटीशन अछि कोन कंपटीशन टॉल शिप्स इवेंट ओके सेथरे भरुन भाग नबाकू जाउची सो सेल टू द एडवेंचर ओके वो सब गुड़ा है गला